Hello students, welcome to STUDIFYSUCCESS. So today I will start with 8th chapter of class 9th mathematics, that is quadrilaterals. So firstly there are a few definitions. First is what is quadrilaterals. So quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segments. In a quadrilateral there are 2 pair of opposite sides, 2 pair of opposite angles, 4 pair of adjacent sides, 4 pair of adjacent angles, and so on. So now I will tell you what is diagonal of a quadrilateral. So if we join two opposite vertices of a quadrilateral, then the line segment form is called diagonal. For example, here as you can see in the figure, ABCD is a quadrilateral. So if I join two opposite vertices A and C, then the line segment formed by A and C is called diagonal of the quadrilateral ABCD. Similarly, if I join B and D, then again the line segment form is called diagonal of ABCD quadrilateral. So a quadrilateral has two diagonals. Last property is that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Now what is parallelogram? So a quadrilateral is called parallelogram if both the pair of opposite sides are equal or parallel, or both the pairs of opposite angles are equal, or diagonals bisect each other, or one pair of opposite side is equal and parallel. So these are the properties of a parallelogram. Now we will move to the first theorem of this chapter, which is a diagonal of a parallelogram divide into two congruent triangles. So what is given to us कि ABCD is a quadrilateral and we have to prove that diagonal AC divide into two congruent triangles. So how we will proceed is we consider two triangles, that is triangle ABC and CDA, and we will prove them as a congruent. Okay, so how we will proceed is, so in this quadrilateral ABCD हमें ट्रायंगल ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. फर्स्टली अगर ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो जो BC है वो पैरेलल होगा AD के एंड AB इज पैरेलल टू DC. तो पहले मैं ये कंसीडर करती हूँ कि AB इज पैरेलल टू AD. So AC will act as a transversal, right? So I can say कि अगर AD जो है वो BC के पैरेलल है तो और AC जो हमारा है वो ट्रांसवर्सल है, तो alternate angles are equal. So this implies कि BCA is equals to DAC. Similarly, अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि AB is parallel to CD, then again AC is a transversal. So now these two angles will be equal because alternate angles are equal. That is, angle BAC equals to angle DCA, and also AC is common here. So these two triangles are congruent by angle side angle. So hence we prove that a diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. Now next question is, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. So here it is given to us that this ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal and we have to prove it is a parallelogram. So how we will proceed, हमें ये गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज BC जो है वो AD के इक्वल है और AB जो है वो CD के इक्वल है. तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ, तो बाय सिंपलिसिटी में ये प्रूव कर दूंगी कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड अगर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल then we can say कि these two opposite sides are parallel, which implies कि ABCD is a parallelogram. So ABC और ACD इन दोनों ट्रायंगल्स में
हमें गिवन ये ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी और ए सी जो है ये साइड ये हमारा कॉमन साइड है. सो बट एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ए बी सी जो है वो सी डी ए की कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो बाय सी पी सी टी मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ कि बी ए सी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, that is DCA. Similarly, BCA, this angle is equals to DAC by CPCT. So अगर ये दो एंगल्स इक्वल है, that is BAC अगर DCA के इक्वल है और BCA जो है वो DAC के इक्वल है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इम्प्लाइज अगर BC जो है that is ये एंगल BAC, ये एंगल जो है अगर इसके इक्वल है, दिस इम्प्लाइज कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है. सिमिलरली अगर मैं ये प्रूव करती हूँ कि ये एंगल बी सी ए डी ए सी के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज कि बी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है. राइट. सो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और वो पैरेलल भी हैं, दिस इम्प्लाइज कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. Next question is show that each angle of a rectangle is a right angle. So हमें क्या given है कि ABCD is a quadrilateral और हमें ये prove करना है कि ABCD is a, we have to show that each angle of a rectangle is a right angle. ABCD अगर rectangle है तो उसके सारे angles जो है वो 90 डिग्री होगा, ये हमें prove करना है. So what we know is कि a rectangle is a parallelogram in which one angle is a right angle, right? So हम क्या suppose करेंगे, let ABCD is a rectangle in which A equals to 90 degree. Then we have to show that BCD equals to 90 degree. So हम कैसे proceed करेंगे, अगर ये एक parallelogram है तो AD जो है वो BC के parallel हो जाएगा. Then AB will act as a transversal. So अगर A जो है अगर ये 90 डिग्री है तो हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है AB, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. तो अगर A जो है अगर 90 डिग्री है और एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो जो B होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली हम अगर देखते हैं तो हमें पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD, राइट. एंड यहाँ पे जो BC है वो एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा. सो अगर एंगल B 90 डिग्री है तो और B और C का सम जो हो 180 डिग्री होगा, अगेन बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. तो अगर B एंगल 90 डिग्री है तो C भी 90 डिग्री होगा. Similarly, BC is parallel to AD, तो अगेन C और D का सम 180 डिग्री होगा और C 90 डिग्री है तो D भी 90 डिग्री होगा. Hence we have proved that each angle of a rectangle is a right angle. Now we will move to second question, which is show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. So ABCD is a rhombus, this is given to us, and we have to prove that diagonals are perpendicular to each other. So we have to prove that angle AOD is 90 degree. So what is given to us, that ABCD is a rhombus, which means हमें पता है अगर ABCD rhombus है तो उसके सारे sides जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, that is AB equals to BC equals to CD equals to DA. अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल AOD इस ट्राइंगल को COD, दैट इज COD, इसकी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो हमें क्या पता है कि सिंस रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट. सो OA जो होगा, सॉरी AD जो होगा वो होगा CD के बराबर, दैट इज AD जो है CD के बराबर है और OD जो है वो हमारा कॉमन साइड है. और ऑल्सो वी नो कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हेंस OA जो है वो OC के इक्वल है. So by SSS congruence, AOD is congruent to triangle COD. This implies by CPCT we can say that AOD, that is this angle, is equals to COD, this angle, right? So also हमें ये पता है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय CPCT. हमें ये पता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन OD, तो इन दोनों का सम दैट इज एंगल AOD और COD का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम. सो AOD प्लस COD इक्वल्स टू 180 डिग्री और हमें पता है AOD इक्वल्स टू COD, तो हम COD की जगह पे AOD लिख सकते हैं. तो AOD प्लस COD को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. So AOD equals to 90 degree. So the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other, which we have proved. So student, this is all about today's class. If you want to download the notes of this lecture, you can find the link in the description box. Also, you can also download the app STUDIFYSUCCESS. Thank you.